Okay, good morning, all of you. So, today we are going to study the Biot-Savart law. It is from the chapter magnetic field and moving charges. Okay, so I find this topic interesting and मैंने देखा I observed कि काफ़ी सारे questions JEE के पेपर में इस particular topic से पूछे गए हैं. So it is interesting topic. Let's start this. Okay, so Biot-Savart law. With this Biot-Savart law हम क्या find कर सकते हैं? एक करंट कैरिंग वायर है और ये छोटा एलिमेंट उस करंट कैरिंग वायर का, और आर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. देयर इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर हैविंग एंगल थीटा विद दिस वायर. सो दिस एक्सप्रेशन और दिस लॉ सेज कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे करंट कैरिंग वायर एलिमेंट की वजह से, so this is the expression of Biot-Savart law. Okay, but here we have the magnetic field सिर्फ इस छोटे एलिमेंट की वजह से, लेकिन हमें चाहिए पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो वी विल मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली. ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस केस. वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर. कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे. स्ट्रेट वायर है, आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस पॉइंट, और हमारे पास यहाँ स्मॉल वायर एलिमेंट है डीएल लेंथ का, एंड लेट्स से दिस इज एल डिस्टेंस अवे एंड दिस इज आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. Now I can easily write the expression of magnetic field due to this small current carrying wire element of length dl. Okay, ये current carrying wire l. एंगल्स भी मेंशन कर लेते हैं. ये एंगल अल्फा 2, अल्फा 1, थीटा 1, थीटा 2, and this particular angle is theta. Okay, so yeah, you can observe this expression is can be related to this particular diagram. यहाँ पर r length, theta angle, and okay, this particular angle theta here in this expression, ये थीटा एंगल होता है वायर के बीच में और उस पर्टिकुलर पॉइंट से अटैच होते हुए पोजीशन वेक्टर के बीच में. ओके, सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और लेट्स से नॉट कंफ्यूज, consider this angle alpha. So this is alpha here, sin alpha angle. Okay, now let's move ahead. So इस particular expression में there is a problem. अगर मुझे पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, so I have to sum up all the magnetic field due to all the elements, all the small elements. So in this expression there are two variables, दो चीजें जो चेंज हो रही हैं, एक अल्फा और एक आर. बिकॉज ये डीएल एलिमेंट में यहां पर अगर कंसीडर करता हूं, दिस आर विल चेंज, दिस अल्फा विल चेंज. सो टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन सिंपली आई हैव टू मॉडिफाई दिस. ओके, सो लेट्स मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. So from this right angle triangle we can easily check this alpha plus theta is equals to pi by 2. Okay, and this sin alpha can be changed accordingly. Alpha is equals to pi by 2 minus theta. Okay, so using this in this expression, sin alpha becomes sin pi by 2 minus theta. And now for this r, as this r is also changing, इसको भी हम थीटा के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं. So it can be seen from this right angle triangle, this theta is equals to what? We can say cos theta is base over hypotenuse. Okay, base over hypotenuse. Let's say cos theta from the diagram, cos theta is equals to base is r, which is constant,
over hypotenuse r. So from here we have this r is equals to r sec theta. Okay, this goes here down here, and then 1 by cos theta is equals to sec theta, you know. And now this dl element we also have to change this in terms of theta. हम इस पूरे एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं. So this dl elements can be changed. How? Let's say now we will take this side and this side. Okay, हम कांस्टेंट टर्म को ले रहे हैं हमेशा, जो चेंज ना होता हो, और थीटा के टर्म्स में पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं. So we can see that tan theta is equals to perpendicular over base. So from diagram again, tan theta is equals to perpendicular here is L over base here is R. Okay, so from here perpendicular over base is equals to tan theta. Now L is equals to R tan theta, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको dl. So dl, let's differentiate it, will become tan theta का differentiation sec square theta. Okay, so from here we have three things to put in this equation: 1, 2 and 3. Okay, let's put these three results in this equation. Now dB becomes mu naught I over 4 pi I, dl is r sec square theta, and this sin alpha becomes cos theta, and in denominator at the place of r square we will have r sec theta square. Okay, so which simply becomes what? Mu naught over 4 pi I cos theta over r. Now everything cancels out, and we will have this beautiful expression here in which you can see there is only one term which is changing, cos theta. Okay, so when we will differentiate it, there we will have d theta also. Okay, mu naught over 4 pi I cos theta d theta r. So now it is easier to integrate this expression because अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, थीटा वेरिएबल. Okay, let's integrate this. So limits will be from this theta 1 to this theta 2, and क्योंकि ये theta 1 baseline के इधर है, so we will take it as negative theta 1 to theta 2, and it can easily be integrated now. So these are all constants. Mu 4 pi I r can be taken out, and cos theta has to be just integrated. So this dB, when we will integrate it, it will become the magnetic complete total magnetic field. Okay, and here we will have, and then this cos theta becomes what? Sin theta from the limits of, and this can be related to and which simplifies to okay. So this is the final expression to find the magnetic field due to this long current carrying wire in this range of angles theta 1 to theta 2. अब यहाँ पे कुछ केसेस इमर्ज होंगे. केस 1, what if this wire is infinitely long?
अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, so these two angles will be very small and this point, ये पॉइंट के जो थीटा 1 थीटा 2 एंगल है ये नियरली 90 डिग्रीज हो जाएंगे, बिकॉज these will be very small and these will be nearly 90 degrees. Okay, so let's theta 1 and theta 2 will be nearly equal to 90 degrees, due to which it will become into 2. Sin 90 is 1, so 1 plus 1 is 2. Okay, so case second, if this wire is semi-infinite, semi-infinite means only this wire from this point up to infinity. So अगर ये सिचुएशन है, so थीटा 1 हमारे पास में कितना है 0 and थीटा 2 is, अगर ये infinity है, so theta 2 will be nearly equal to 90 and this theta 1 will become 0 for this half wire. Let's say this wire is up to this point and then beyond. So this becomes what? Sin theta 1 becomes 0, as sin theta 1 is 0 and plus sin 90. So this will give you mu naught I over 4 pi r. This is for semi-infinite wire. Okay, so these are the different cases, and now third one is very important. Third case is, what if this wire is of just this length? Situation is like this. We have this current carrying wire and now this is angle theta 1 and this is angle theta 2. So in the same expression for case third, in this case third, the point is not in front of wire. Wire के सामने ये point नहीं है. So in the case third, we will have B is equals to mu naught I over 4 pi r and bracket sin. Now जब ये point wire के सामने नहीं होगा, we will take this angle as negative theta 1 and then another one is positive sin theta 2. Okay, this is what we need to remember कि ये एंगल इसको हम थीटा 1 कहेंगे और ये नेगेटिव होगा और ये पूरा कंप्लीट एंगल थीटा 2. So as you can see that this is the difference, so we will left with this just theta. Okay, so this is case third. So we will move to solve the questions based on this particular topic. Okay.